Welcome back to Tide and Loam. I am your instructor Hassaan, and today we are going to study an important component of plant cells which is called plastid. And plastid is not a single organelle, but it is a family of membrane bound organelles. So plastid कोई एक organelle नहीं है बल्कि it is a family of many membrane bound organelles and it has multiple types. It is found in plant cells and other photosynthetic protists such as algae. So plastids के बारे में एक important चीज that they are found only in plant cells and some algal cells, but it is absent, totally absent in animal cells. Animal cells has nothing to do with the plastids. Plastids are found only in plant cells and some algal cells. And a general introduction of plastids. Plastids are specialized factories. They make food, they marketize plant cells, and they store food. So plastid is a family है membrane bound organelle की. They are found only in plant cells. They are absent in animal cells, and they are specialized factories which make food, marketize plant cell, and store food. So this is a general introduction of plastids. और plastids ऐसा कैसे करते हैं? We will study this in detail. But before that, we will study the types of plastids. अभी हमने plastids को कहा कि plastids are a family of membrane bound organelles, so there must be other members in the family. So let's introduce the members of plastids family. The first one is chloroplast. Plastids की पहली type है chloroplast, which is actually food producing department of the plant cell. Chloroplast plant cell के green parts में present होता है and क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फूड प्रोड्यूस करना, ग्लूकोज को बनाना, फूड बनाना. दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. द सेकंड मेंबर ऑफ प्लास्टिड फैमिली, द सेकंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट, विच इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इट इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स. सो फ्लावर से आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि व्हाई क्रोमोप्लास्ट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द प्लांट सेल, because it gives colors to the flower cells और फिर वही flowers insects को attract करते हैं जिसकी वजह से pollination का process होता है. The third type is leucoplast, which is the storage department. Leucoplast are present in the roots and they store food. So there are three members in the plastids family. The first one is chloroplast, which is food producing department. The second one is chromoplast, which is the marketing department. And the third one is leucoplast, which is the storage department and stores food. So अगर आपको ये चीजें अभी थोड़ी सी obviously clear नहीं है, but don't worry, we will study them in more detail in upcoming slides. The first type of the plastids that we are going to study, it is chloroplast. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं chloroplast को. Chloroplast are green plastids. As you can see here, all the text and the images are in green color. So it is obvious that chloroplast are green plastids and they are present in the cells of green parts of plant and in algae. Chloroplast plant के जितने भी पार्ट्स ग्रीन है उन सब पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. एक्चुअली द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, दैट्स व्हाई प्लांट एंड लीव्स अपीयर ग्रीन. कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आई द ग्रीन क्लोरोफिल. और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों है? बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड दिस क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. क्लोरोफिल ही की वजह से क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है. So here we have a plant cell. This is a plant cell and inside plant cell you can see these green structures. These green structures are chloroplast. These green structures are chloroplast. And what are chloroplast? Chloroplasts are food producing factories of plant cells. So let's study the function of chloroplast. जो फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का है वही क्लोरोफिल का है, बट विद स्लाइट डिफरेंस के क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है विच हेल्प्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट इटसेल्फ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस.
chloroplasts carry out the process of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से, विच एक्चुअली कैप्चर्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी एंड यूजेस दिस केमिकल एनर्जी टू मेक ग्लूकोज. सो बेसिकली होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर उस केमिकल एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट यूज करता है फूड बनाने के लिए. एंड दिस इज हाउ क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूसेस फूड. Chloroplast carries out the process of photosynthesis with the help of chlorophyll, which converts light into chemical energy, and ultimately that chemical energy is used to make food. Now let's understand this with the help of a figure. Here we have a plant cell. This is a plant cell, or chloroplast are present in the green parts, और यहाँ पे chloroplast present होंगे. So क्या होगा कि जो प्लांट सेल है वो अंडरग्राउंड रूट्स की मदद से वाटर प्लांट सेल में जाएगा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल में जाएगी, और सूरज की रोशनी जो लाइट है वो प्लांट सेल्स पर पड़ेगी. देन इनसाइड प्लांट सेल्स एज वी नो देयर आर क्लोरोप्लास्ट, और इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर इज क्लोरोफिल. सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, और उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उस केमिकल एनर्जी को यूज करेगा फूड बनाने के लिए. और वो फूड क्या होगी? ग्लूकोज, विच इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट. सो इनसाइड लीव्स फूड इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी. You will study the process of photosynthesis in more details in upcoming lectures, but for now you just have to understand कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फूड बनाना, और क्लोरोप्लास्ट फूड बनाते हैं with the help of the process of photosynthesis, और क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करता है क्लोरोफिल. Now here we have a few pictures of the microscopic pictures of different organisms containing chloroplast. For example, this first picture, ये plant cell की picture है, और इसमें जो green all the green structures are of chloroplast, and these are few other images which are of algae. ये different type of algae और different type of plant cells की images है. For example, this is of volvox, और these all appear to be green. ये सब green इसीलिए नजर आ रहे हैं because they all have chloroplast. This is the image of plant cell and it is appearing green because they have green chloroplast in it. इस algae में इन तमाम algae में इनका जो green color है, it is because of the presence of green chloroplast. Now we will study the structure of chloroplast, and the first structure that we are going to study, it is double membrane. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है. वन ऑफ द मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन, एंड बिटवीन मेम्ब्रेन्स देयर इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. सो ये है क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, एंड द इनर वन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है, इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. नाउ इनसाइड डबल मेम्ब्रेन वी हैव द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड द फर्स्ट वन इज ग्रैनम, जिसका सिंगुलर है ग्रैनम. So on the internal side of inner membrane की internal side, there are many sets of stalked membranes, and these stalked membranes are called grana. Now as you can see here, these are stalked. This is a set, and this is a set of stalked membrane. This is one membrane, two membrane, three membrane, 4, 5. So ये जो membrane का एक stalk है और इसका ये जो पूरा set है, this set is called grana. For example, this is a granum, this is a granum. ये जो membrane के stalks है ना, these stalks are called granum, and they are present inside on the inner side of the chloroplast.
or the sac-like structures which make up granum are called thylakoids. Now in the previous slide we saw that this whole one, this is a granum, और इस ग्रेनम के अंदर ये जो एक पार्टिकुलर एक मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थाइलाकोइड. सो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड थाइलाकोइड्स. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्टॉक ऑफ कॉइन. एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर रखा गया है एंड दिस होल फॉर्म्स अ सेट, अ होल स्टॉक. इन द सेम वे thylakoid is like you can say these sac-like structures, these membranic structures are the coins of the chloroplast. और ये एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड हैं. दिस इज वन थाइलाकोइड, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. और ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं जस्ट लाइक these coins. As these coins are placed over one another, in the same way thylakoids sacs are also stocked over one another. और ये जो पूरा सेट है, this whole set is called granum. एक थाइलाकोइड्स को एक दूसरे के रखने के बाद, एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेनम. और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, लाइक यू कैन सी दिस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इन्हीं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. एंड विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट? ऑफ कोर्स क्लोरोफिल. सो ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. Now we have stroma. The fluid surrounding the thylakoids is called stroma and it contains DNA and ribosomes. Now first we saw that case सबसे पहला structure है double membrane and one of the membrane is outer membrane. Then we have the other membrane which is called inner membrane. Or inside membrane we have stalks of, which are stalks of membrane sacs and these are called granum. Or in each of these granum, the each membranic sac is called thylakoid. और in इस double membrane और इस thylakoid granum structure के दरमियान जो fluid है ना, that fluid is called stroma. So the fluid surrounding thylakoids is called stroma and it contains DNA and ribosomes. It has DNA and it has ribosomes. So the structure of the chloroplast consists of double membrane and inside the double membrane there is a granum and thylakoid. और thylakoid और inner membrane के दरमियान जो fluid and that fluid is called stroma and it contains DNA and ribosomes. Now before concluding the lecture I want you to show these images of chloroplast. So जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते हैं, so we get this image, this black and white images of chloroplast and as you can see here these lines are thylakoids and the whole stalks are of granum. और जब हम इसे कंप्यूटर की मदद से विजुअलाइज करते हैं, इसका एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, then we get this image. This is a 3D visualization of this electron microscope image. और स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, इस स्टडी को एक्सपेंड करने के लिए हम एक जनरलाइज्ड, एक मोर इलेबोरेटिव इमेज बनाते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें. एंड दिस इज वन ऑफ द इमेज. एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्टॉक which is called grana, or and each of these granas, each sac in this granum is called thylakoid. And this one is even most simplified image of the chloroplast. So इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्लोरोप्लास्ट हमें इस तरह से दिखाई नहीं देता, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नजर आती है. फिर कंप्यूटर की मदद से हम इसे इस तरह विजुअलाइज करते हैं एंड देन वी डिजाइन ग्राफिकली इमेजेस टू एक्सप्लेन these टॉपिक्स टू स्टूडेंट्स. And this concludes our lecture. Thank you for watching.